Moving on, a students protest suspension notice in Delhi University's Hindu College. Students have been protesting against a notice sent to several students for holding a protest against the college principal last month over the annual fest and for the alleged financial fraud during the event. Students are demanding withdrawal of notice. Last month, DU's Hindu College suspended over 20 students for 2 months and fined them rupees 10,000 for protesting against the principal and allegedly demanding college property. We have Ishika joining us on the story. Ishika, DU students are protesting. In fact, they are protesting over suspension notice given to them by the university. In fact, they had held a protest before as well over certain issues. Take us through the details as to why they were fined at this point. Well, yes, Radhika, just a few days back, we saw, in fact, the ABVP students, they were protesting inside the college over the suspension notice that was given to around 20 to 30 students of Hindu College, and a 10,000 rupees fine was imposed on them. Now, these students, the suspended students, they say that they were protesting. In fact, they were peacefully protesting at that time against the principal because she had curtailed their 3-day annual fest to, in fact, 1. Now, we have some students with us, Radhika. I'll go across to them. So, these are the students who were suspended, who got the suspension notice. हमें आप ये बताइए कि आप जब तभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या पूरा मामला था? क्योंकि लगातार अथॉरिटी ये क्लेम कर रही है कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, खासकर प्रॉपर्टीज जो है वो भी डैमेज की गई। जी, मैका जो हिंदू कॉलेज का एनुअल फेस्ट है वो पहले 3 दिन का हो रहा था, लेकिन जब मैका से 5 दिन पहले मैम का ये फरमान आता है कि जो फेस्ट है वो 3 की जगह 1 दिन का होगा, उसके खिलाफ बच्चों ने पुलिस परमिशन लेके शांतिपूर्वक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ फेस्ट होने के बाद बिना कोई कमेटी बैठे नोटिस आता है। कितने बच्चों के खिलाफ? 35 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो नोटिस आया, ये नोटिस प्राप्त होता है 4 मई को, जिसमें ये मेंशन है कि जो लड़के जो स्टूडेंट उसमें प्रोटेस्ट का हिस्सा थे उनको 2 महीने का सस्पेंशन, 10,000 रकम जो है जुर्माने के रूप में भुगतनी होगी और 2 महीने का सस्पेंशन, और फ्यूचर में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी, अथॉरिटीज़ लगातार ये भी क्लेम किया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की गई है जिसके कारण फाइन लगाया गया है। नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी तो कोई डैमेज नहीं की गई, हम तो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस से परमिशन लेके। मैं कहीं वो जो प्रॉपर्टी डैमेज का कोई इशू नहीं है। So, Radhika, let me also tell you that after that, the AVP students, in fact, they protested against this suspension notice. We have that student as well. हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने प्रोटेस्ट होल्ड किया, उसके बाद क्या आपको अथॉरिटी से रिस्पॉन्स मिला है? हमने ABVP की तरफ से सबसे पहले 8 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन गया था प्रिंसिपल मैम के पास बात करने। तो प्रिंसिपल मैम ने एश्योरेंस दी थी कि कल तक कुछ ना कुछ समाधान हम निकाल देंगे, डिसिप्लिन कमेटी की एक बैठक होगी। तो मंगलवार के दिन, अब हमें नहीं पता उनकी कोई बैठक हुई है नहीं हुई है। उसके बाद बुधवार को फिर से हमारा ABVP का डेलीगेशन शाम को 6 बजे मैम से मिलने आया। तो मैम कॉलेज में उस टाइम पे थी नहीं, तो बच्चों ने एक पीसफुल तरीके से आराम से बैठ के अपना धरना प्रदर्शन किया कि मैम जब भी वापस आएंगी हमारी मांगें सुनेंगी और बच्चों का सस्पेंशन के बारे में कुछ बोलेंगे। तो रात के 12 बजे तक हम सब ABVP के सभी छात्र यहीं पे थे। रात में मैम की तरफ से एक डेलीगेशन आता है टीचर्स का, और वो ये अश्योर करता है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी कल सुबह। तो फिर उसके बाद बृहस्पतिवार वाले दिन अगेन हमारा डेलीगेशन ABVP की तरफ से जाता है, जिसमें हमारे हर्ष भैया प्रांत मंत्री जो ABVP के हैं वो थे। तो मैम ये अश्योर करती हैं कि किसी भी बच्चे का क्लियरेंस नहीं रुकेगा, क्योंकि सस्पेंशन होने की वजह से लाइब्रेरी से किसी को क्लियरेंस नहीं मिल रहा था और एग्जाम में बैठने से सारे बच्चे वंचित थे। तो मैम ने अश्योर कराया कि कोई भी बच्चे का अभी कोई सस्पेंशन नहीं होगा, किसी को कोई भी फाइन नहीं देना होगा और सबका क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी क्लियरेंस नहीं हुआ, तो कल शाम को 5 बजे जाके ये हुआ था कि सभी बच्चों को क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ABVP ने इस मामले में स्टार्टिंग से बच्चों का एंड लेते हुए अभी तक बचे। तो फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका डेलीगेशन जो है वो जाके प्रिंसिपल से मिला, आप लोगों को अश्योरेंस भी मिला, तो अभी आप लोगों ने क्या प्रिंसिपल से बातचीत की है और खास करके आपने उन्हें कोई अल्टीमेटम भी दिया है? We had a conversation with the principal. The delegation met the principal and we put all our demands forward. So they were quite convinced with our demands that those who are involved in the peaceful protest
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो एक भारी जुर्माना एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट पे 10,000 का लगा है, वो जुर्माना जो है इट मस्ट बी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ, इट मस्ट बी टेकन अ बैक। और जो सस्पेंशन कर के ग्राउंड्स थे वो ये थे कि जब तक सस्पेंशन रहेगा, जब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, तब तक स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू अपेयर इन एग्जाम्स until and unless they pay their fine. So we demanded that they must review this, and those who are involved in financial fraud, we are not with them. University or the college administration must take any kind of action they want to take against those who have who are really involved in that kind of fraud. But those who are protesting peacefully and were demonstrating their democratic right should not be suspended. So they completely gave us assurance that no one will going to be restrained from appearing in exams. And we also had a word with AO, Administrative Officer. She also gave us assurance that every student will get the clearance to appear in exam. And we gave them the ultimatum of 10 days, that in 10 days they must review all these suspension letters, and those who were involved in the peaceful protest, all those suspension letters must be withdrawn. Also, we gave them this time because examinations are going on, and several teachers are involved in those examination duties. So that's why we given them this time span of 10 days. So Radhika, as you clearly heard, the students here, they say that in fact, now they met in fact the principal and they were given assurances that all these suspension notices, they will be reviewed, and those students who are in fact holding peaceful protests, against them, those suspension notices will be withdrawn, and these students will also be allowed to sit in the exams. Now the students here have also given an ultimatum of 10 days, that in 10 days all these assurances should be fulfilled. Otherwise, they'll go again and protest. Over to you. All right. So some sort of assurance has been given by college administration. Also, Ishika, could you put in context the entire background of the suspension notices that has been given to them? If you can take us through the allegations against a college principal, because they were holding protests against a college principal over an annual fest and for alleged financial fraud. So take us through details of these allegations that led to the protests in the first place. Well, yes, Radhika. Now, the students here say that, in fact, their annual fest, which is called Mecca, that was going to be organized, and that would be a 3-day protest. Now, the students here claim that, because of certain things, the administration, in fact, they took a decision that this 3-day fest will be curtailed to 1. And that is why all these students, in fact, they sat on a dharna, while they got the permission, and even then suspension notices were served to them. I'd like to go across to the student here again. मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो ये आया फरमान आया कि 3 दिन का जो फेस्ट है उसे एक ही दिन में सीमित कर देंगे, ये क्यों लिया गया? ये इसमें मैम का अपना पर्सनल हमने पूछा भी, मैम क्या वजह रही, कोई उन्होंने लिखकर या किसी भी प्रकार की वजह न देते हुए ऐसे कहा कि 1 दिन का ही करवाएंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड का भी एलिगेशन लगाया था अथॉरिटीज़ ने, कॉलेज अथॉरिटीज़ ने, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। नहीं, बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर क्या क्या एलिगेशन? बाकी स्टूडेंट्स का एलिगेशंस का तो मुझे पता नहीं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। So, Radhika, these students continue to say that they were in fact, a part of the peaceful protest, and in fact, the college administration, in fact, serving them suspension notice was wrong, against which, again, they held a protest. So now, in fact, they have got the assurance, and they are waiting that these assurances should be fulfilled, and, otherwise they will be going for another protest. All right, Over so to you. students waiting for the assurances to be fulfilled at this point. Thank you, Ishika, for bringing all those voices.